Good afternoon, sir. Good afternoon, friends. Good afternoon and welcome after a long vacation. Very good afternoon, sir. Good afternoon. Okay. कैसे हैं आप सब लोग? Fine, sir. कैसी रही दिवाली? अच्छा रहा, बढ़िया रहा सर. एंजॉय किया दिवाली? ये बढ़िया रहा सर, बहुत अच्छा. Yes. After long time, long break. Good afternoon. Yeah, good afternoon. लोग दिवाली से आए नहीं अभी तक शायद. Received 600 rupees on Google Pay for business. है ना? दिवाली से लौटे नहीं अभी लोग. Okay. Okay, should I start? Yes, sir. Okay, thank you. So this case is dedicated to my guru, Dr. Praful Vijaykar sir. In last session before Diwali, we have seen that the case analysis of slow progressing psychotic disease, right? Now today we will see the slow progressing psychosyphilitic disease. What is the approach in these diseases, in these disorders, like chronic myeloid leukemia, chronic leukocytic leukemia, rheumatoid arthritis, nephrotic syndrome, vitiligo, renal failure, cancers, autoimmune disorders, SLE, HIV, myopathies, diabetes ketoacidosis, Parkinsonism, motor neuron disease, third degree uterine prolapse, hyperthyroidism, hypothyroidism, gout, psoriasis, and lichen planus. So these are the psychosyphilitic diseases. Dr. Vijaykar sir gives us a different paths in analysis of cases according to miasm, according to diseases, according to pathology. So in these cases, psychosyphilitic cases, slow progressing psychosyphilitic cases, sir gives 8 steps for analysis. In first step, sir says, first, you should have identified the miasm. And identification of miasm, it's totally depend on the chief complaints, associated complaints from mind and body. Afterward, step 2, journey of disease. In journey of disease, it is important to know which type of diseases he suffered in his past. Since childhood, कुछ डिजीजेस में प्रेगनेंसी हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट हो जाती है.
इसलिए since childhood Slide is not visible. voice Slides. slides not visible. Okay. Now, Sir. अभी दिख रही है? Yes, sir. Okay. So in journey of disease, journey of his past history, his diseases, his complaints, which type of diseases since birth he was suffered. Then our job is to make a list of these diseases according to layer, chronological order, according to miasm, according to organs. क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है हमें फॉलो के लिए. सो separation of diseases. So we can directly predict the patient after medicine which diseases he will suffer temporarily. Yes. So this is the second step. Now third step is cause. Find out the cause of disease. But this cause is not important when the miasm was already settled in this case. So according to footnote 120, then step 4, find only syphilitic rubric, syphilitic symptoms from the mind, physics, and general dispositions. Step 6, the symptoms, totality of symptoms from generals. So thirst, thermal, sleep, any peculiar symptoms if you find from the generals. Then sixth step is peculiar physical or general symptoms. Any type of peculiar, PQRS symptoms हमें find out करना है physicals और generals. तो मोस्टली हमें इसमें देखना है कुछ सिपिलिटिक मिलता है. सिपिलिटिक टेंट का कुछ सिम्टम्स साइंस मिलता है. And seventh step is repertoire. Afterwards, select the medicine on the basis of disposition. So these are the 8 steps, very simple steps. And these, if you follow these 8 steps, and you will get the right remedy, right constitutional simile. So today we will see the case of nephrotic syndrome, one of the case of from slow progressing psychosyphilitic disease, the deep pathological case. When we see these patients, especially nephrotic syndrome, this patient comes with lot of hopes, but basically these patients are hopeless. His relatives already lose their hopes because ये patient fresh में हमारे पास आते ही नहीं थे. They come after lot of consumption of steroid because in allopathy there is only treatment of steroid. So जब ये patient आते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम में डाल देते हैं क्योंकि एक तो स्टेरॉइड के विड्रॉल सिम्टम्स, स्टेरॉइडल सिम्टम्स हमें पहले कवर करना है कि डिजीज सिम्टम्स, क्योंकि स्टेरॉइड ने पूरा कॉम्प्लेक्स बना के रखा होता है. लॉट ऑफ सैचुरेशन, लॉट ऑफ एक्यूमुलेशन, वहां पे वाटर का होगा रहता है. So we face two problems in these patients. So this case is a very knowledgeable case for me. It gives me a lot of knowledge.
and a courage how to handle these cases. This 7 years boy, when came to me, he was totally become लड्डू, पूरा गोल मोटोल हो गया था. आप देख सकते कि उसका मुंह फेस कितना स्टीरॉइड खाया होगा. Yes. So the 7 years old boy, male boy, he was first standard student. मैं आपको उसका वीडियो दिखा देता हूँ. आपको दिख रही है स्क्रीन? यस सर, दिख रही सर. वीडियो दिख रहा है? हाँ सर. ओके. क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? नगदीपुर. क्या? अच्छा, आपके फ्रेंड कितने हैं? फ्रेंड्स का नाम बताओ आपके. पहले ही बोल दिए थे हाँ हाँ. कि तुम्हारा पेट और गाल एकदम ऊपर आएंगे ये. अच्छा. इससे चिंता करने का काम नहीं है कुछ भी. हाँ. जब तक ये ट्रीटमेंट चालू रहेंगी. हाँ. का दुख देख लिया या फिर कोई बीमार है? हाँ, फील करता है, दुख होता है उसको, यानी ऐसे सहन शक्ति ज्यादा नहीं है. See the reports. HB10, TLC 12,700, neutrophil 75. No, sorry, HB16 है. Blood urea it is normal, creatinine normal, सोडियम थोड़ा कम है, and the main thing in nephrotic syndrome is urine analysis. Urine analysis में हमेशा albumin lost होते रहता है. So albumin is 4+. Then granular calcins, pus occasional. So this was the case. आपने पेशेंट को ऑब्जर्व किया है, टोटली obesity because of steroid, moon face because of steroid, right? Abdominal distension, swelling on abdomen because of steroid. Now the history. Chief complaint was edematous swelling all over the body since 1 year. Moon face, abdomen pot belly, back total edema, and extremities with pitting edema.
voracious appetite, coryza with sneezing since 4 months, dry cough since 1 month, superficial cracks on fingers, weakness, dullness, breathlessness, worst by exertion and while stepping up. Body weight was 29 kg. He was just 7 years and body weight was 29 kg. BP was 110/80. Physical generals, thermal, he was hot, thus 1+ with dryness of throat, desire for fried food, spicy food, sour food, sour like pani puri and patties, aversion for sweets, appetite voracious, stool regular, urine turbid and perspiration, 2+, sleepiness. हिस्ट्री थोड़ा ध्यान में रखिए. पास हिस्ट्री में बर्थ बाय सिजेरियन सेक्शन, he was born with cesarean section. इसका मतलब क्या? Yes, तो हमें 8 स्टेप्स ध्यान में रख के एनालिसिस करना है. फर्स्ट स्टेप्स क्या है? आइडेंटिफाई द माइजम. Syphilitic. Yes. Second step, that is the causation, positive factor. So birth was cesarean section. Timely routine vaccinations, eruptions on body treated by allopathic ointments. Eruptions on body treated by allopathic ointments. A recurrent cold, coryza and cough. Intermittent diarrhea after eating outside food. Circumcisions operation in the year 2001. Dengue in the year 2004. This is the past history, journey of history. Dengue in 2004, nephrotic syndrome and was under allopathic treatment since 1 year with steroids, that is tablet Pantop, tablet Dicaris, syrup Pridome and syrup Shellcap. So he was on this treatment since 1 year, and family history was father, businessman with tension, hence was suffering from hypertension. So father is psychotic. Mother, leukoderma with anxiety neurosis. So mother with syphilis. Sister chronic sinusitis, grandfather hypertension and died by CA, again syphilis, grandmother hypertension and diabetes, psychosyphility, uncle hypertension and ISD, psychosyphility. So this is the family history. So we reach a conclusion that the miasm is psychosyphilitic. So हमारी फर्स्ट स्टेप कंफर्म हो गई, माइजम इज साइकोसिफिलिटिक. सेकंड स्टेप, अभी हमें पॉजिटिव फैक्टर देखना है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का. बट वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ miasm was already blue. First, the birth by cesarean section and mother having the miasm syphilis, leukoderma. So here miasm is, according to footnote 120, miasm is already blue. So we don't need of causation, right? Yes.
तो हमारी सेकंड स्टेप क्लियर हो गई. Now, life and nature of this patient. Life and nature. He is from very rich joint family. Father is a businessman, mother housewife, and having a very nice, beautiful elder sister. Family consists of grandmother, uncle, auntie, and their 2 sons and daughter. A very happy-go-lucky family, and he is a very ladla of every member of the family. Due to this, he becomes very obstinate to fulfill any desire or demand. However, if it is not fulfilled, he will cry only. While watching TV, if channel is changed by somebody, then he will cry until the channel of his liking is displayed. He is a very smart and intelligent, but never doing study at his own. He is a very smart and intelligent, but never doing study at his own. Always has to be forced for study. In spite of this, getting above 90% marks. That means very intelligent. Hobby was sport like playing and watching cricket, football, chess, etc. He is a very shy and timid child. आपने वीडियो में देखा होगा, उसको नाम पूछा तो कैसे शर्मा रहा था. So he is a very shy and timid child, never mix with unknown children, people or strangers. However, doesn't like to remain alone also. मतलब wants company. Timid. He is a very capricious, restless, beats to his sister, but with love. Beats to his sister, but with love. Very affectionate, loving, caring, cheerful, but sometimes jealous to his sister. All neighbor love and likes him, but if somebody gives trouble, he will never reply, but will come to home weeping and will report everything to his mother. Very close to mother, clinging to mother, weeping, crying. His reaction is crying only, weeping. Never fighting child. He always want mother and never leave her. When he entered in my cabin, he was behind her mother and was watching, but when I called him, he came very bashfully with smile. Fear of birds and butterfly. As per his mother said, he is a very sensitive to wet clothes. He is a very sensitive to wet clothes in childhood. जैसे कपड़े गीले करता था, डायपर गीले करता था, पट से जाग जाता था. When his clothes were wet, he used to cry. Likes traveling and roaming in the evening in open air and likes to eat fast food. Reports. EVG was bilateral medicorenal disease, grade 1. Blood investigation, HB 16, TLC 12,700, platelets 2.1, blood urea 29, and serum creatinine 0.8. Urine analysis, albumin 4+, pus cells 4 to 8,
epithelial cells occasionally, cast, granular cast cells. So according to Dr. Vijaykar's teaching of reductive school of homeopathy, approach in treatment of these cases like slow progressing psychosyphilitic diseases we have seen in the starting. These are the slow progressing psychosyphilitic diseases. And this is one of the case from this slow progressing psychosyphilitic disease. And these 8 steps, we have to follow these 8 steps to solve this case. So first step, identify the miasm. What is the miasm? That is slow psychosyphilitic journey of disease. Syphilis already present there. Journey of disease. He was suffered from eczema, then sinusitis, then Dengue fever. Dengue fever again. तो इन रिवर्सल ऑफ डिजीज हमें क्या प्रिडिक्ट करना है पेशेंट को? क्या डेंगू यहाँ पे रिवर्सल में आएगा या फिर साइनोसाइटिस एक्जिमा आएगा? During treatment, in ROS, reversal of original symptoms, he will temporary suffer by sinusitis, and after that, eczema. This is our reversal. After that, cause, यहाँ पे cause important नहीं है because miasm is already present there. Then syphilitic miasm हमें अभी देखना है. तो हिस्ट्री में आपने syphilitic क्या देखा? उसकी हिस्ट्री में ऐसा क्या सिफिलिटिक आपको दिखाई दिया? माइंड में, फिजिकल जनरल्स में? क्या क्या देखा आपने? कौन से रूब्रिक्स हम यहाँ पे ले सकते हैं? Sweet aversion. Sweet aversion too, but it is इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है सिफिलिटिक कि हम उस रूब्रिक के बेस पे इस केस को सॉल्व कर सके. एक्सक्यूज मी सर. यस. voracious appetite. Voracious appetite, that is psychotic. And that voracious appetite is because of steroid. So steroidal symptoms हमें नहीं लेना है. जो भी स्टेरॉइडल इफेक्ट्स बॉडी पे होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ऐसे केसेस सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि 2 चीजें हमें फेस करनी पड़ती है. एक बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड से जो हुआ और देन डिजीज, है ना. तो वोरेसियस एपेटाइट इट इज अ स्टेरॉइडल सिम्पटम. Sir, too much obstinate, too much obstinacy is there. Yes, obstinacy is there. Clinging to mother. Okay. और his exaggerated sensitivity, sensitive to wet cloth. This is exaggerated sensitivity, you know. So it may be syphilitic. Again, he was hot, thirstless, right? Yes. So according to Dr. Vijaykar's layer miasmatic chart of suppression, miasm is psychosyphilitic and layer is 4th layer, mesothelium derived mesodermal organ, 4th layer disease. Now the understanding of this case: he was obstinate, headstrong, weeping, amuleret, intelligent,
play desire to, shy bashful, timidity, alone aggravate, capricious, restlessness, beats alternate with love, affectionate, cheerful, jealousy, wants mother, fear of birds, sensitive to wet clothes, like traveling, desire open air, craves fast food, dryness of throat, hot patient, and thirstless. So this is my observation. So which symptoms are important for us for repertization? तो ये इंटरप्रिटेशन हमने देखा ही है ना? The miasm has bloomed, then cause is not so important. Syphilitic miasm of mind, physicals and generals, made timidity, bashful, sensitive children, hot patient, thirstless, and peculiar physical general symptom था, that is abuse of poisoning of medicament, जिसकी वजह से इतना obese हो गया, right? Now we will repertorize this case. I select for repertorization timidity bashful, and this rubric I have selected because of my observation, क्योंकि उसे कुछ भी पूछा कि ऐसे करता था, इतना शर्माता था वो. So that's why I take this timidity bashful. Then sensitive to clothes, क्योंकि वो अभी भी अगर कपड़े गिल्ले होते हैं तो तभी के तभी उठता है रात में और चेंज करके मिलता है. Then abuse of poisoning of medicament. So these three rubrics I have selected, and I get Natromute, Naxomica, and Pulsatilla. So which is the constitutional of this child? Pulsatilla. Pulsatilla, because it is hot and Yes, sir. thirstless, dryness of throat, clinging to mother, weeping, crying disposition, never revolting, right? Yes, desire company, aversion to alone. So very simple case, and very simply it was solved. So I have selected only simple common rubrics, simple easy rubrics. Now step 8, differentiate the remedies according to disposition. What is the disposition of Natromute? Elements from fright, grief, disappointment in love, introvertedness due to oversensitiveness. तो ऐसा कुछ हमें इस केस में मिला ही नहीं कि एलिमेंट फ्रॉम फियर, फ्राइट, disappointment of love, no. Non-diligent, yes, this patient was non-diligent but very intelligent. Anger when oblique to answer, ये भी आयोटा भी उस केस में नहीं था. So aloof, loner, he was never. He likes company. Sensitive to rudeness, aggravation from consolation, pity, silent, quiet, aversion to guests, he likes guests. Craves salt, hot patient, thirsty, he was thirstless. Sadness, weeps without knowing why, and revengeful, he was not revengeful. So Natromute was ruled out. And Pulsatilla was very meek, mild, gentle, yielding disposition, and timidity, bashful, weeping, tearful child,
wants mother near, always wants mother, desire consolation, craves sympathy, fear to be alone, dark, ghost, changeability of modalities and symptoms, even thirst, desire, open ear, aversion to hot food. So, very clear picture of pulsatilla. Pulsatilla single dose on 19 to 2007 was given. Now see the follow-up. सर पैथोलॉजिकल रूब्रिक नहीं लिया हम लोग कुछ नहीं, means मैंने आलू बहुत ही सिंपल रूब्रिक लिया था उस वक्त, बहुत ही सिंपल। जो मैंने देखा, जो मैंने मेरे सामने ऑब्जर्व किया, वही सिम्टम मैंने ऐड किया। मैं आपको एक बार उसका फेस दिखा देता हूँ। आपको दिख रहा है वीडियो? नो सर। अभी अभी दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। क्या नाम है आपका? एक बार उसका फेस देख लीजिए, बॉडी देख लीजिए। कहाँ रहते हैं आप? नगदीपुर। उसका पासफुल अच्छा, नहीं आपके देखना। फ्रेंड कितने हैं? फ्रेंड्स का नाम बताओ आपके। बताओ बेटा। पहले ही बोलते थे हाँ। कि तुम्हारा पेट और गाल एकदम ऊपर आएंगे ये। अच्छा। इससे चिंता करने का काम नहीं है कुछ भी। हाँ। जब तक ये ट्रीटमेंट चालू रहेंगी। हाँ, का दुख देख लिया या फिर कोई बीमार है? हाँ, फील करता है, दुख होता है उसको, यानी ऐसे सहन शक्ति Sensitive ज्यादा है। नहीं है। Yes. Now the follow-up. देखिए उसका फॉलो। What is the change? इडीमा पूरा खत्म हो गया। पूरा चलेगा। यस। कहाँ पे आती खास? ये इसमें बहुत खास। This is the starting of his eczema, skin rashes. Yes. Now he is returning syphilitic to soda. अच्छा। बट ये जो अभी इरप्शन दिख रहा है, इट इज साइकोटिक इरप्शन। आप देखो कितना थिक है, थिक एलिवेटेड है, दैट इज साइकोटिक इरप्शन। साइकिल चलाता क्या तू? हाँ। अच्छा, थकता नहीं? बिल्कुल नहीं। स्टैमिना इंक्रीज। अच्छा, कितनी साइकिल चलाता? कितनी देर चला साइकिल? सी इज रेस्टलेसनेस, हाइपर एक्टिविटी। डॉक्टर साहब पूछ रहे। बोलना कितनी देर चलाता है? नहीं चलाओगी? बहुत देर तक। आधी घंटा। स्लो चलाता है, फास्ट चलाता है? दोनों भी चलाता। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप? एक्टिविटी भी कम हो गई। यस। मस्ती से जवाब दे रहा।
उसका जो बाशफुलनेस था, जो अच्छा बाशफुलनेस था वो कम हो गया है ना? यस हाय कॉन्टॅक्ट करतोय आता. यस, आई कॉन्टॅक्ट करतोय. That means that timidity bashfulness was syphilitic, right? Now it become controlled. Yes. ऐसी है अच्छी लगती वीकनेस वगैरह नहीं वीकनेस वगैरह तो कुछ भी नहीं सर. नहीं ना. Now report. Blood urea normal, creatinine normal, sodium normal, potassium normal, and albumin, it is nil. Yes. Albumin is nil. Yes. No cast, no cast, no bacteria. And the last follow. कैसा लगा? चेंज हो गया बिल्कुल. अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर. वीडियो दिख रहा है? यस. ओके. कैसा लग रहा बोलो? बोल जल्दी बोल. अच्छा लग रहा. शैतान बहुत हो गया सर ये. कैसा? मस्ती बहुत करने लग गया. अच्छा. ऐसा होगा. ओके. हाँ? अभी उसकी सोरिक टिमिडिटी देखो. नाउ सी द एक्जिमा. Yes, sir. और उंगली भी वही वाली होगी वापस. Sure. बीच में बुखार आ गई थी ना इसको. बहुत थी सन बुखार थी. और उल्टी कंटिन्यू उल्टी करता था. दूध वगैरह पिया कुछ भी. खांसी सर्दी तो थी इसको. हंसी थी, उल्टा करता था और बुखार. Yes. सब पूरा किया है. Yes. So this was the case. Very well. Now किसी को कुछ कहना है, पूछना है? हाँ सर, एक्सक्यूज मी सर. यस बोलिए. सी सेक्शन डिलीवरी यानी कि ऑलरेडी वो सिप्लिटिक पाइजम ब्लूम में था. अपन ने सर जब उसको इरप्शंस आए थे, इफ यानी कि जब छोटा था उस वक्त एक्यूट चार्ट से ठीक करता था, वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम तक पहुंच सकता था क्या सर? फिर भी यानी कि उसको सपोज अपन ने जैसे पहले इरप्शंस आए थे ना उसको सर. यस. तो उस समय में अपन एक्यूट चार्ट्स वगैरह यूज करके उसको ट्रीट किया, तो वो बाद में फिर भी वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरफ जा सकता है क्या नहीं जा सकता है सर? ये पूछना था मुझे. यानी कि देखो, अगर एक्यूट चार्ट से इरप्शन ट्रीट करते थे तो हो सकता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम तक जाए, क्योंकि सोरा हमें ट्रीट करना है तो हमें एक्यूट चार्ट का यूज नहीं करना पड़ेगा. हमें उसकी हिस्ट्री लेके उसे कॉन्स्टिट्यूशनल ही देना पड़ेगा. अगर एक्यूट से, क्योंकि इट इज अ क्रॉनिक एक्जिमा, इट इज अ क्रॉनिक, क्योंकि एक्जिमा आया उसके बाद उसको साइनोसाइटिस हुआ, उसके बाद उसे ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ, राइट? तो ऐसे केसेस में अगर वो एक्यूट भी है, एक्यूट इरप्शंस आए, तो पहले कॉजेशन फाइंड आउट करो कि क्यों आए. बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन है, उसकी प्राइमरी रिएक्शन ऑफ बॉडी है, कि और कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि इरप्शंस है तो वो सोरिक है कि साइकोटिक है, जैसे फंगल है दैट इज साइकोटिक.
तो ऐसे केसेस में हमें उसकी हिस्ट्री लेके ही उसे ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, एक्यूट चार्ट यूज नहीं करना है वहाँ पे। हाँ सर, अभी सर जैसे मैक्सिमम बर्थ जो है सी सेक्शन डिलीवरी से हो रहे हैं मैक्सिमम। Yes. तो अभी सर जैसे अभी उनको बार बार कोल्ड कोराइजा वगैरह होता है, तो अभी फिर कैसे करेंगे सर उस समय में? एक्यूट से ठीक करेंगे क्या? जैसे सपोज 3-4 दिन से बुखार है उनको, फिर क्या उनको बार बार हो रहा है? fever, cold coryza, you can use acute chart. Diarrhea, you can use acute chart. But skin eruptions है कि because skin eruption always long period से होते हैं, 1-2 दिन के हैं तो वहाँ पे वेट एंड वॉच करना है, वो ऑटोमेटिकली जाएंगे। अगर नहीं गए, सब एक्यूट बन गए, देन क्रॉनिक बन गए, तो यू हैव टू टेक द केस एंड प्रिस्क्राइब। और यानी सभी सी सेक्शन डिलीवरी वाले ऑलरेडी यानी कि हर एक को सिफिलिटिक ही होगा, ये जरूरी नहीं सर? जरूरी नहीं सर? यस, उनको कभी ना कभी कुछ ना कुछ सिफिलिटिक होने वाला ही है, because the C-section birth is not normal, it is syphilitic. मीन्स सर these are syphilitic predominant है ना, मतलब syphilitic disease रहेगा तब हम लोग ये सोचेंगे। वो बच्चों को लाइफ में सिफिलिटिक कुछ ना कुछ होगा, या फिर दे टर्न ऑन सिफिलिटिक वेरी फास्ट। तो ये तो ये प्रोग्नोसिस जैसा होगा ना सर, मतलब वो प्रेजेंटली अगर कोई एक्यूट केस या फिर सोरी केस लेके आता तो हम लोग को सोरी की नहीं, ऐसे केसेस जैसे ये एग्जांपल है ना, ऐसे केसेस में वहां पे मायाजम अपन ने कंसीडर किया कि उसका बर्थ सिजेरियन से हुआ, तो मायाजम वाज ऑलरेडी ब्लूम एंड other sign of syphilitic was her mother was leucodermic, right? उसके मदर को ल्यूकोडर्मा था, इसलिए वो भी एक सिफिलिटिक वहां पे हमें सिम्टम मिला। हाँ सर, हमने खाली एक ही कंसिडर नहीं किया वहां पे कि सिजेरियन सेक्शन से उसका बर्थ हुआ, उसके मदर का भी मायाजन सिफिलिटिक था, मतलब बिफोर बर्थ ही वाज इन सिफिलिटिक। Before birth, her mother was in syphilitic. Yes. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you. So pulsatilla, abuse of medicament, oversensitive to allopathic medicine, mild weeping disposition, yielding but selfishness, changeability of symptoms, desire consolation, open ear, grand sensitiveness. When first serious impairment of health is referred to age of puberty. Yes. Dry mouth with no thirst. Pain appear suddenly. Desire for spicy food and hot patient. See the change in face, right? So this was the case. Thank you very much. Again, if you have any query, doubt, question, then you can ask. सर एक्झिमा आता फ्लेड अप झाला, आता वेट अँड वॉच किती वेळ करायचा मग? ऍक्च्युली या केस मध्ये त्याचा एक्झिमा जायला 6 मंथ लागले. ओके, मग रिपिटेशन करायचं की नाही करायचं अशा वेळेला? नो, आफ्टर आई थिंक आफ्टर 3rd मंथ, मतलब ये एक्जिमा अपियर होने की 3 महीने बाद मैंने उसको पल्सिटिला 1M का एक डोज दिया था, देन एक्जिमा पूरी तरह से निकल गया। आणि सर मग इन बिटवीन इचिंग आणि ही कंप्लेंट खूप सिव्हिअर असते पेशंटला, मग अशा वेळेला काय करायचं? 3 महिने वेट अँड वॉच खूप डिफिकल्ट होतो पेशंटसाठी, दिसतं I always suggest the coconut oil only. Okay. Only coconut oil. And this child, he was 7 years old. Now he is 25 years old. Okay. Yes, he become an engineer. Yeah, he become an engineer. Wow. Yes. Yes. So this was case. Thank you very much. Thank you, sir. Yes. Disha. Thank you, sir. Yes. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Yes. तो ये बहुत ही सिंपल केस थी, लेकिन
केस सिंपल थी लेकिन डिजीज वाज नॉट सिंपल, क्योंकि कितने सारे पेशेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम से जाते हैं, है ना, क्योर नहीं हो पाते, या फिर स्टेरॉइड खा खा के उनके कई सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे से ये केस सॉल्व हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर केस इसी तरह से सॉल्व होगी, राइट? क्योंकि we treat the disease, we treat the man in disease, not the disease. इसीलिए हम अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के इतने सिंपल वे से अगर केस सॉल्व होती है तो नेक्स्ट पेशेंट अगर कोई आता है तो हम इसी तरह से जाएंगे, नेवर, ऐसा नहीं होता है। तो हर केस में हमारा एनालिसिस, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है उस पर डिपेंड होता है उसका रिजल्ट, क्योंकि आप किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस तरह से आप केस का एनालिसिस कर रहे हैं। हर केस में आप इसी तरह से नहीं जा सकते। आप स्टेप 8 फॉलो कर लो, लेकिन हिस्ट्री डिफरेंट रहेगी। हिस्ट्री में आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से सिम्टम्स को एनालाइज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड होता है सॉल्यूशन। तो कल हम देखेंगे बहुत ही एक्सलेंट केस ऑफ माय लाइफ, दैट इज द गैंग्रीन, क्यूटेनियस गैंग्रीन, जो फर्स्ट विजयकर सर का कॉन्फ्रेंस हुआ था, कंपटीशन हुआ था प्रोडक्टिव होम्योपैथी का, उस फर्स्ट कंपटीशन में इस केस ने मुझे वोनिंगहाउसन ट्रॉफी दिलाई थी, और बहुत ही एक्सलेंट वे से ये केस सॉल्व हो गई थी, और बहुत अच्छी केस है जो फास्ट प्रोग्रेसिंग सिफिलिटिक केसेस कल हम देखेंगे, जिसमें ये केस मैं आपको दिखाऊंगा क्यूटेनियस गैंग्रीन की। तो कल का सेशन किसी ने मिस नहीं करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है कल का, और बहुत ही एक्सलेंट केस आप देखेंगे कल। उस केस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यस, तो और किसी को केस टेकिंग के लिए कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिफिकल्टी है, तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर नरेश बावनकुले है क्या आपने इसमें? नरेश बावनकुले है तो हैंड राइज कीजिए। डॉक्टर नरेश बावनकुले नहीं है? ओके, सो डॉक्टर नरेश बावनकुले का परसों मुझे फोन आया था। उनका कोई रिलेटिव था, पेशेंट था, जो डिलीवरी का पेशेंट था, तो उनका एमनियोटिक फ्लूइड कंप्लीटली लॉस हुआ था, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड कंप्लीटली लॉस, एंड that gynecologist suggests that emergency C-section। तो इनका फोन आया मुझे कि उसके पेन भी टोटली डिसअपियर। बावनकुले का फोन है क्या? मधु, नरेश बावनकुले का फोन है पापा? यस, तो उस लेडी के पेन भी डिसअपियर हो गए थे, फेंटनेस वाज देयर, then chilly, thirstless, very sleepy। तो मैंने जस्ट पेशेंट से हिस्ट्री लिया थोड़ी सी। पहले डॉक्टर बावनकुले को बोला कि आप हिस्ट्री लो, क्योंकि वैसे तो कोई अपन मेडिसिन नहीं दे सकते। तो सर बोले इतनी इमरजेंसी है, डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट ने तैयारी कर ली, बोले सिजेरियन सेक्शन की, तो अभी क्या करना? तो मैंने बोला आपको
सीजर करना होगा तो आप कर दीजिए। नहीं बोले नहीं सर मुझे करवाना नहीं है बोले सीजर, और पेशेंट भी उसके लिए तैयार नहीं है, तो अभी क्या कर सकते हैं? विदाउट लिकर नॉर्मल डिलीवरी होना इट इज इम्पॉसिबल। सो ऐसे केस में क्या करना? रिस्क वॉज देयर फॉर मदर एंड बेबी आल्सो। तो फिर मैंने बोला एक काम करो हिस्ट्री लो, तो बोले मैंने हिस्ट्री लिया लेकिन उस हिस्ट्री में कुछ मिला नहीं। तो फिर मैंने बोला कि आप एक काम करो, पेशेंट को फोन दो डायरेक्टली फास्ट। पेशेंट से 2-4 क्वेश्चंस पूछे, तो सी वाज फील वेरी स्लीपी। बोले मुझे अभी भी इतनी नींद आ रही, बोले ऐसे लग रहा कि मुझे किसी ने छोड़ देना, मैं सो जाऊंगी, और फेंटिंग हो रहा है बार बार, फेंटिंग इन बिटवीन पेन्स। कभी कभी पेन आते हैं, पेन चले जाते हैं, फेंटिंग होता है और स्लीपीनेस बढ़ जाता है। वेरी चिली, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ड्राइनेस ऑफ यूटेरस, राइट? पूरा एमनियोटिक फ्लूइड चले गया था। सो ड्राइनेस ऑफ पाथ ऑफ बर्थ। तो इस बेस पे मैंने उनको नक्स मॉस्केटा दिया 200, और आधे घंटे में उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। सो दिस वाज अमेजिंग। Yes, sir. This was amazing. One dose of Nux mosqueta gives a normal birth. क्या पोटेंसी थी सर? 200. Potency was 200 single dose. आज उनका फोन आया कि सर बोले उस दिन मेरा फोन नहीं करना हुआ, एंड उसके आधे घंटे में ही नॉर्मल डिलीवरी हो गई। इसलिए मैंने पूछा, वो होते थे तो वही शायद बता देते थे। Yes. Miraculous result आया। Yes. So thank you very much. Thank you, sir. तो हम यहीं पे अभी स्टॉप करते हैं, कल फिर मिलेंगे विथ एनालिसिस ऑफ फास्ट प्रोग्रेसिंग सिफिलिटिक केसेस। हेलो सर, एक छोटा Yes. सा रिक्वेस्ट है सर। केस टेकिंग तो फार्मा हमारे पास नहीं है। ओके, जी सर, अगर किसी अपलोड करवा देते तो अच्छा रहता सर। ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएंगे आपको व्हाट्सएप। सर थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, चलो ठीक है फिर। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू। थैंक यू। नॉर्मल डिलीवरी सीजर है।